Good morning, my dear pupil teachers of B.Ed second year. Subject is Pedagogy of English, paper number 12th and 13th, and paper code is 9202. And the topic today is Object-Based Learning, OBL, or it can be asked what is the use of object in English teaching. ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, कोई भी वस्तु, उसका सही सहयोग कैसे कर सकते हैं. टीचिंग पॉइंट इंट्रोडक्शन. सेकेंड, व्हाट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग. थर्ड, व्हाई टू यूज ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग. एंड फोर, हाउ टू यूज ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग. एंड फिफ्थ, एन एक्टिविटी फॉर communication skill development. First point is introduction. Object-based learning, or we can say teaching with an object, is an approach. Here object-based learning is an student-centered learning approach. यहाँ विद्यार्थी केंद्र पर है. विद्यार्थी वस्तु को देखेगा, ओ इट इज़ लॉन्ग, इट इज़ शॉर्ट, इट इज़ रफ, इट इज़ स्मूथ. तो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच है ये. इन ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग एन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, वस्तु को काम में लिया जा रहा है, कोई भी वस्तु. एनीथिंग वी कैन यूज इन डेवलपिंग कम्युनिकेशन. व्हाट इज द कलर, व्हाट इज द साइज, व्हाट इज द एरिया. तो ऑब्जेक्ट इज यूज टू फैसिलिटेट का मतलब तेज करना, एक्सेलरेट, टू फास्ट, फैसिलिटेट डीप लर्निंग एंड टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल का मतलब बातचीत करने की कौशल, ये इससे विकसित कर सकते हैं हम. ऑब्जेक्ट में मैनी फॉर्म्स. अब वस्तु के कई आकार हो सकते हैं, स्मॉल, बिग, लार्ज, स्मूथ, रफ. जैसे क्यूबिक का मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, उसको क्या कहते हैं, घन कहते हैं हिंदी में. तो उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक. क्यूबॉइड, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो तो वो क्यूबॉइड. जैसे पेटी होती है संदूक, क्यूबॉइड. सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल है, पाइप जैसा. तो अलग अलग प्रकार के आते हैं. ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप. बिग, सिलेंड्रिकल एक्सेट्रा. मेथड typically involve students handling or working with object themselves. इस मेथड में क्या है, लड़के खुद उस वस्तु को देखेंगे, स्पर्श करेंगे. typically involve student handling or working with object themselves. They interrogate with each other. They will speak with each other in English, not in Hindi or other language. But here our aim is to develop English communication. So they will interrogate, यानी बात करेंगे. How it is long? It is 5 centimeter long. In this way they will interrogate with each other about the object. Object can be used in multiple ways. कई तरह से काम में ले सकते हैं, multiple ways. And in tactile, its nature is tactile. Tactile का मतलब होता है जिसको स्पर्श कर सकते हैं. Its nature is tactile. Tactile यानी we can touch it. वस्तु को टच कर सकते, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे टचेबल. तो इट्स नेचर इज टैक्टाइल. नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट. अंडरस्टैंडिंग कम फ्रॉम इट रियल. इससे क्या है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है. व्हाट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग. अब और क्या समझ में आता है ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग में. ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग इज ए फॉर्म ऑफ एक्टिव लर्निंग. इसमें बच्चों को एक्टिव किया जाता है.
यानी theoretical teaching has no effect on student. If some activity is designed only, then the students will take interest and they will be motivated to learn. So it is active learning. Object offers a tactile experience. Tactile का मतलब होता है स्पर्श करने की एक्सपीरियंस, और ये चिकना है, इट इज स्मूथ, इट इज रफ, तो उससे वो इंग्लिश में उसको डिस्क्राइब करेगा. टैक्टाइल एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स विच चैलेंज देम टू इंट्रोगेट अबाउट द ऑब्जेक्ट, जिससे क्या है, दे द क्वेश्चंस विल अराइज इन देम to ask other boys, and other boys will answer, and then in this way the communication will go on about object. And conceptually मतलब about the concept, इसको संदर्भ में कहते हैं. conceptual their thinking, उसी विषय पे वो सोच करेंगे, thinking about the object. The students construct meaning for themselves, और वो अपनी भाषा ही विकसित करेंगे. Why to use OBL, object based learning? ऑब्जेक्ट कोई क्यों काम में ले? Because it is found in every house. All students have seen many objects in their life, so they are belong to their real life. So teaching through object will be a real teaching. Students see many objects as a visual aid in their life. There are many objects in every house. Their function are different. They are used for playing, for cooking, for drinking, for eating, for decorating, etc. So I was saying that there are many uses of these objects in house, and these are available freely. No cost is paid for the objects. Spoon is used, ball is used, football is used. Every object can be used for the communication. And so once a teacher develop a communication with the help of object, यदि टीचर क्लास के अंदर उनकी सहायता से कम्युनिकेशन करवाता है तो क्या होगा? एक बार टीचर जो है ये कम्युनिकेशन विद हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट डेवलप द कम्युनिकेशन, देन द स्टूडेंट्स themselves will start communicating with each other, with their friends, with their brothers, with their sisters, about the object. So see, we are discussing about this thing. How it is shaped. This is spherical, this is cylindrical, this is cubical. In this way they will start communicating. So this is very cheap method. So why should use this? So this should use this because the objects are available easily. Now how to use ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग? ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग आओ या नहीं आओ, केवल ऑब्जेक्ट भी लिखा हो तो भी यही है. हाउ ऑब्जेक्ट्स आर यूज फॉर कम्युनिकेशन. तो स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू फिजिकली हैंडल द ऑब्जेक्ट. अब इसके अंदर बच्चों को कहा जाता है इस चीज़ को हाथ में लो, पकड़ो, इसको घुमाओ, हैंडल द ऑब्जेक्ट, मेक ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखो, मेक ऑब्जर्वेशन, माइन्यूटली यानी ध्यान से, ऑब्जर्वेशन यानी देखना, अबाउट इट्स फॉर्म, कैसा आकार है इसका, सरफेस, इसकी सतह कैसी है, मेक कंपैरिजन, फिर कोई दूसरी चीज़ पड़ी है उससे कंपैरिजन, मेक कंपैरिजन विद दिस ऑब्जेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट, दिस इज लॉन्गर देन दैट, दिस इज स्मॉलर देन दैट, दिस इज स्मूथर देन दैट, this is more rough than that object. In this way comparison, the language will be used. Comparison with other object, or discuss its function. What is the function for it is used in house or anywhere. OBL is very useful to engage such student. Most important thing is here to engage such students in the class who never speak in the class, who never respond the teacher's question.
जो बोलते नहीं है, हेजिटेशन इज देयर इन देयर नेचर, उनकी स्वभाव में क्या हिचकिचाहट है, शर्म है, बोलना नहीं चाहते. टीचर कैन एंगेज सच स्टूडेंट इन दिस एक्टिविटी. उनको भी हाथ में बॉल देगा, कैसा है, क्या भाई, व्हाट इज दिस, दिस इज बॉल सर, तो वो भी बोलने लगेगा. तो द मेन यूज इज दिस टू एंगेज सच स्टूडेंट्स who don't speak in class or respond. Communication can be developed with some questions about the object. Object के बारे में चीज़ पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे. Example, what is the object? चीज़ क्या है ये? This is a ball. This is a spoon. In this way वस्तु का नाम बोलेगा. What is its function? क्या काम आती है? What is its function? It is used in eating. It is used in playing. It is used in cooking, etc. Is it smooth or rough? कैसी है ये? हाथ फेरो इसके ऊपर, स्मूथ है कि रफ है, खुरदरी है कि चिकनी है. अब फिफ्थ पॉइंट, I have devised an activity. Example, छोटा सा एग्जाम्पल है. एन एक्टिविटी फॉर डेवलपिंग कम्युनिकेशन. ऑब्जेक्ट इज ए बुक, सपोज ए बुक. नाउ टीचर्स एक्टिविटी, क्लू एंड पीपल्स एक्टिविटी. व्हाट इज दिस? क्लू दिया है, बुक, काम में लो और वाक्य बनाओ. तो क्या कहेगा? सर दिस इज ए बुक. व्हाट इज इट्स यूज? तो क्लू दिया है, रीड. अब वो कैसे भी काम, वी रीड इट. इट इज यूज्ड इन रीडिंग. कैसे भी सेंटेंस बनाएगा? रीड काम में लेना है. इट इज यूज्ड इन रीडिंग, फॉर रीडिंग. वी रीड इट. एवरीबडी कैन रीड इट. हु राइट बुक्स? क्लू दिया राइटर, तो राइटर्स राइट बुक्स. इन दिस वे कम्युनिकेशन इज डेवलप्ड. एंड नाउ देयर आर सम असाइनमेंट क्वेश्चन. व्हाट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग, और हाउ आर ऑब्जेक्ट यूज फॉर टीचिंग इंग्लिश. ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग तो मैंने लिखा है, बाकी ऑब्जेक्ट ही है खास. इम्पोर्टेंट इज ऑब्जेक्ट. वाई ए टीचर शुड यूज ऑब्जेक्ट फॉर टीचिंग इंग्लिश, या OBL अप्रोच. हाउ कैन OBL बी यूज्ड टू टीच इंग्लिश. तो कम्युनिकेशन इज डेवलप्ड विथ द ऑब्जेक्ट. Okay, thank you. Have a nice day, my dear PP teachers.